हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज हूँ 18 नवेम्बर 2024 मंडे। सो आज जो हिंदू न्यूज़पेपर ताको आम एनालिसिस करूँ जोटा कि रिलेवेंट फॉर द ओपीएससी यूपीएससी ओके एंड अदर्स रिलेवेंट। चलते आम डिस्कशन स्टार्ट करवा। सो बेसिकली जब देखा यहाँ आम रोचे ओपीएससी यूपीएससी देन अदर्स ओके। सो जिते सारा आम इम्पोर्टाट सब न्यूज रोचे जहाँकि GS1 टू GS4 पर्यंत तो ताकू आम कवर करचे बाय द न्यूज़ पेपर। सो दिस इज द फर्स्ट पेज जदि आम डिस्कशन करवा 2 more bodies found आर्मी डिप्लॉयड इन द इम्फाल ओके। सो यहाँ हूँ मणिपुर आपण मैंने जानते भाइलेसन के स्टार्ट है ओके। सेटा दिस इज ऑल न्यूज ताको आम डिस्कशन करवानी पूर्व ऑलरेडी डिस्कशन करूँ। आ गोटे कथा कहबी ये आसपा नाला ओके। आर्म फोर्सेस जोटा कि पावर स्पेशल पावर आर्म फोर्सेस को दि जाए बट अब रिसेंटली किछ दिन पूर्व यहाँ ये भी आसपा लागू होती 2022 यहाँ हटा जाइथिला बट एबे होची रिसेंटली ऐड करा जायछि ओके। सेठी लागू डिप्लॉय करा जायछि आसपा। जदि देखिबा ए आसपा उपरे आमे 2 दिन पूर्व जो न्यूज आसथिला ता उपरे भी आमे पूरा डिटेल्स रे डिस्कशन करिछु ओके। ओके सो को कौन कौन होची कौन नहीं कौन कहानी एटा सेठी देछि डे आफ्टर द वायलेंट प्रोटेस्ट रॉक्ड इम्फाल आफ्टर 3 of 6 abducted people were found dead okay. The bodies of 61-year-old woman and 2-year-old boy were found floating in the rivers okay Lakhifood in the Assam on the Sunday okay. So this is the current news and starting जदि news ताको include करिबा हमर कुकी कथा okay। तो इटा लिखि परिबा हमें देन हमें एठी लिखि परिबा आसपा कथा okay. Armed forces this is not armed forces special power okay act तो ताको भी इंक्लूड करि परिबा। देखो एटा क्वेश्चंस आसीबार इथक मेंस रे बहुत पॉसिबिलिटी रहछि जोटा कि आपण मान को एटा द्वारा एटा कोन मान टोटली प्रिपेयर करिया कथा आसपा तो आसीबो ही 100% आसीबो ओके। तो कुकी और मेटी रो कोन सब इश्यूज रहिछि ता ऊपर भी पूर्व हम डिस्कशन करछु ओके। तो दिस इज द होल न्यूज आम एते डिस्कशन करबानी। चलो नेक्स्ट जदि देखिबा इंडिया नाइजेरिया विल जॉइन द हैंड्स टू टैकल द टेररिज्म पायरेसी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग PM। सो रिसेंटली हमर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजिट करछंती जोटा कि नाइजेरिया को ओके। तो नाइजेरिया हम देखिथिले जोटा कि हमर अफ्रीकन कंटिनेंट रो ओके इन द वेस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंटिनेंट रो अछि जोटा ऑलरेडी हमें गतकाली हमें जोटा कि हमर मैप अच्छी से मैप द्वारा आम डिस्कशन करूँ जोटा कि साउथ आटलांटिक ओशन को कनेक्ट रही। सो नाइजेरिया कथा जब देखा ए रिसेंटली जो विजिट कर बहुत सारा MOU साइन MOU कौन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओके। इंडिया अकॉर्ड्स विद हाई प्रायोरिटी टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ नाइजेरिया एंड इट विल बी वर्क टुवर्ड्स द बूस्टिंग द टाइज इन ए रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग द डिफेंस एनर्जी ट्रेड ओके। ये गुड़ाक ऑलरेडी थिला कोडाक डिफेंस एनर्जी ट्रेड एगुड़ाक सब ऑलरेडी MOU पूर्व साइन होता बट अब रिसेंटली एगुड़ाक ऐड है कौन कौन ना टेररिज्म पायरेसी एंड ट्रैफिकिंग ओके। इन द televised the opening remarks of the meeting of the Mr. Modi identify the terrorism, separatism and privacy, drug trafficking as major challenges and said that two countries should continue to work together for the dealing them okay। जदि हमें देखिबा इठी हमें कौन देखिबा ना इंडिया एंड नाइजेरिया बायलैटरल रिलेशनशिप्स देखो क्वेश्चन आसे यहाँ हूँ आम GS पेपर 2 रे कवर होची जोटा कि फॉरेन कंट्री रिलेशन जोटा कि बायलैटरल ट्रेड आम कहूचे रिलेशन कहूचे बायलैटरल ओके रिलेशंस कहूचे। तो बायलैटरल रिलेशंस रे आपण जो न्यूज आसिला आम इंडिया और नाइजेरिया सेटा बहुत इंपोर्टेंट यहाँ आसबार बहुत पॉसिबिलिटी रही जोटा कि मेंस रे इथक ओके। तो चलते आम कौन कौन से देखा हिस्ट्रिकल कौन इकोनॉमिकल कौन ओके एवरीथिंग पॉलिटिकल कौन डिप्लोमेटिक everything we will be cover it। so जदि देखिबा हमें फर्स्ट आम हिस्टोरिकल देखा हिस्टोरिकल जदि देखा कॉलोनियल लिगेसी देखा बोथ कंट्रीज वे ब्रिटिश ओके
ब्रिटिश रो अंडर थिले बोथ कॉलोनी ओके बोथ कंट्रीज थिले हम जो देखिबा इंडिया एंड नाइजीरिया NAM को the non-aligned movement. India and Nigeria have been active members of the NAM. Okay, advocating for the global South-South cooperation. Diaspora connection जो देखिबा एक significant Indian community reside in the Nigeria. Okay, जोटा कि Mr. Okay, Honorable Prime Minister कहिसंती. Mr. Modi described the nearly 60,000 strong Indians okay expatriate community as key pillar of the India-Nigeria relations. Okay. तो ये डाटा भी जदि आपण देबे सेते बेले ना आपण आंसर दे तो आपण को भलो मार्क्स आसीबो तो डाटा इज द वेरी इंपोर्टेंट जते बेले जहां लेखुचंदी कुछ किछि जिंस तो सिग्निफिकेंट डाटा देले त आपण को भलो मार्क्स आसीबो देन इकोनॉमिक टाइज जदि देखिबा इकोनॉमिक टाइज ट्रेड होची बायलैटरल ट्रेड इन रोबस्ट विथ इंडिया बीइंग वन ऑफ द नाइजीरियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ओके इंडिया इंपोर्ट कोन करची दिस इज द नाइजीरिया दिस इज द इंडिया ओके इंडिया इंपोर्ट कौन करछि ना इंपोर्ट करछि हमर नाइजीरिया रो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस एगुडा को सब कौन करछि ना इंपोर्ट करछि ओके फॉर द एनर्जी कोऑपरेशंस पाइवटल ओके नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द इंडिया इन द अफ्रीका ओके देन इन्वेस्टमेंट जदि कथा हबा इन्वेस्टमेंट जदि कथा हबा India companies like the pharmaceuticals, agriculture, IT, okay, agriculture, IT. Then हमें जदि देखे pharmaceuticals ये गुड़ा significant जोटा कि समान जाए कि invest करचोंदी कोटी ना नाइजीरिया रे okay. Prominent Indian firms like the Tata, okay, Tata, Mahindra, Bharati, Airtel, okay, ये गुड़ा का सब कोटी ना सिटी operate करचोंदी कोटी हमारा नाइजीरिया रे ओके देन हम जदि देखिबा हमर एनर्जी सिक्योरिटी नाइजीरिया इज क्रिटिकल सोर्स ऑफ द okay critical source of the energy for India supplying the around 8% of the India's crude oil import ए डाटा भी आपण जदि देबे आपण कर भलो मार्क आसीबो तो डाटा गुडा को बहुत ही माने इंपोर्टेंट आपण मने रखबा कथा तो 8% हमर जो इंडिया रो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होची जोटा कि हमर को एटा को फुलफिल के करछि ना नाइजीरिया करछि ओके then political and diplomatic जदि देखिबा ओके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रेगुलर हाई लेवल जोटा कि विजिट होची बायलैटरल एग्रीमेंट होची इंडिया सपोर्ट्स नाइजीरिया's रोल इन द रीजनल पीस कीपिंग अंडर द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट्स ओके ग्लोबल कोऑपरेशन देखिया बोथ नेशंस कोलैबोरेशन एट द फोरम लाइक द यूनाइटेड नेशंस देन कॉमनवेल्थ देन G77 नाइजीरिया आउट मोस्ट इंपोर्टेंट कथा होची नाइजीरिया कोन करछि इंडिया को सपोर्ट करछि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लो परमानेंट मेंबरशिप पई ओके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लो परमानेंट मेंबरशिप पई देन हम जदि देखिबा कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज कल्चरल ट्रायल्स ओके बॉलीवुड इज पॉपुलर इन द नाइजीरिया प्रमोटिंग द सॉफ्ट पावर्स ओके सो एक्चुअली आई हैव विजिटेड इन जिबूती ओके तो दैट टाइम मो फील करथली मो जते जाइथिले सेठी जिबूती कथा जदि कहूची ओके जिबूती एटा भी गोटा अफ्रीका रे कंट्री ओके आपण देखिथिबे दिस इज एटी अछि जोटा कि हमर सुएज कैनाल पका पखि रे अछि ओके तो एटी जिबूती जते जाइथिले सेते से माने कहउथिले शाहरुख खान ओके आमिर खान से माने सब जानि चंदी सब एक्टर को ओके तो आम देखा आमर अफ्रीका कंटिनेंट रे आमर बॉलीवुड रे चाहिदा बहुत ही अच्छी ओके तो दिस इज द नाइजीरिया दिस इज द जिबूती ओके तो यू कैन इमेजिन तो एटा माने वाइड स्प्रेड कुछ जोटा कि आमर बॉलीवुड ओके कोटी इन्फ्लुएंस अच्छी आमर अफ्रीकन कंटिनेंट रे एजुकेशनल कोऑपरेशन जदि देखिबा इंडिया इंडियन यूनिवर्सिटीज अट्रैक्ट द नाइजीरियन स्टूडेंट्स ओके देन हम जदि देखिबा इंडिया ऑफर्स द स्कॉलरशिप एंड ट्रेनिंग अंडर द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस ओके डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो देखिबा कैपेसिटी बिल्डिंग्स लाइन ऑफ क्रेडिट हेल्थ केयर ये गुडा सब हमरा डेवलपमेंट कोऑपरेशंस ओके challenges कौन the security challenges कौन Indian nationals and businessmen face the risk due to the Nigeria's internal security challenges like Boko Haram insurgency and piracy पाइन okay तो security challenge रहउची हमर इंडियन जते सब बिजनेसमैन हो बा हमर सेठी इन्वेस्टमेंट कंपनी को तांको पय टिके सिक्योरिटी कंसर्न रहउची लाइक हम जो कहली बोको हराम
ओके बोको हाराम एंड आम जब देखा पाइरेसी ओके ट्रेड इम्बालांस कथा कहि जदि इंडिया इज हेवी डिपेंडेंट ऑन ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम द नाइजीरिया कैन लीड टू द ट्रेड इम्बालांस ओके देन आम रिसेंट डेवलपमेंट देखा डिफेंस कोऑपरेशन होची बोथ कंट्रीज एक्सप्लोर द कोऑपरेशंस इन द मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म ओके रिन्यूएबल एनर्जी रे इंडिया हैज प्रपोज्ड कोलैबोरेशन टू द नाइजीरिया फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी जोटा कि पर्टिकुलरली आम आईएसए जानिचे International Solar Alliance. Okay, digital economy and focus on enhancing the IT collaborations is part of the India's Digital Africa initiative. Okay, then we way forward कौन लिख पारिया ना diversifying the trade like आउ अदर माने हम अदर माने जो सेक्टर्स से गोटा को एंटर करिबा कोठी नाइजीरिया रे देन इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट करिबा देन पीपल टू पीपल टाइज करिबा एगोटा को करिके हम सरे देबा दिस इज द जीएस पेपर 2 रो वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक एंड हम देखिबा एसए रो भी वेरी इंपोर्टेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशन रो भी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक एथक मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस टा आसीबार बहुत ही संभावना रहउछि जोटा कि मेंस रे काहे ना हमर एबे रिसेंटली न्यूज रे अछि त सेति पई हमर ओपीएससी किबा यूपीएससी से माने कोन करंती ना जत्ते सब थाए हमर करेंट न्यूज थाए ताको हमर स्टैटिक सहित जोडी कि से माने पछानंती ओके तो वेरी इंपोर्टेंट यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली देन हम जदी जिबा okay this is the very important news India conducted the historic flight test hypersonic missiles with a range of 1500 kilometers okay so India on the Sunday announced the successful flight test of the maiden's long range hypersonic missiles with a range of 1500 kilometers के question of defense मतलब DRDO okay defense research development organizations conducted the flight test late on the code hichi na Dr. APJ Abdul Kalam Island of Odisha coast okay eta कोडी अछि eta होछि बालेश्वर रे अछि चांदीपुर okay सो आमे एटा आमे जो देखिले एटा हमर मोस्ट इंपोर्टेंट कोडा रहइबो जोडा कि आमे हाइपरसोनिक कथा हबा हाइपरसोनिक कोन हाइपरसोनिक मिसाइल माने कोन देखो हाइपरसोनिक यदि कथा हबा हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर मिसाइल्स दैट ट्रैवल्स द स्पीड ग्रेटर देन द मैच 5 मैच 5 मींस कोन ना 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड रे जते स्पीड अछि तार 5 टाइम्स कोन हबो ना ये होछि ट्रैवल करिवो ओके दी प्रकार अछि हमर होछि कोन हाइपरसोनिक मिसाइल गोटे होछि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स आ गोटे होछि हाइपरसोनिक हमर क्रूज मिसाइल्स ओके तो एति का आपण जानंतु की फीचर्स आरे हला मनोवरिटी अछि मनोवरिटी माने बुलिबा ओके एपटे सेपटे बुली परिवो स्पीड हे गला लो ट्रैजेक्टरी हे गला प्रिसिशन से गला एगोटा का सब अछि ओके तो एटा हम ओनली जानिबा कथा कि हाइपरसोनिक मिसाइल कोन से विषय में पूरा डिटेल से आपण को कहि देली ओके नेक्स्ट जदि हमें देखिबा दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट न्यूज जोटा कि हमें डिस्कशन करिबा कोप 29 कथा हबा इंडिया भी रिसेंटली कोन करछि ना कोप 29 डिस्कशन फ्लैगिंग नो प्रोग्रेस मेड ऑन द इशू क्रिटिकल फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया कहछि कि हमर जो डेवलप्ड कंट्रीज अछंती से माने किछि भी माने प्रोग्रेस कोन नांती डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करिया पाई ओके तो आपण माने जानि छै कोप 29 इथे प्रीलिम्स पाई बहुत इंपोर्टेंट काना एरिया इज वेरी इंपोर्टेंट बाकू कोठी ना अजरबैजान ल गतकाले हमें डिस्कशन करथिले मैप रे कोड कोन अछि ओके लेफ्ट रे कोन अछि ऊपर के अछि रशिया अछि ओके कोन सब हमर सी अछि ओके ताको एवरीथिंग डिस्कशन करथिले देखो कोप 29 बाकुरी होछि इंडिया एक्सप्रेस द फ्रस्ट्रेशंस विथ द डेवलप्ड कंट्रीज फॉर नॉट सीरियसली डिस्कसिंग द सपोर्टिंग द क्लाइमेट एक्शंस ओके इन द डेवलपिंग नेशंस saying that impossible to tackle the climate change without the financing and the technical support or technical help देखो जते पर्यंत हमर डेवलप्ड कंट्री हमर डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प न करिवे फाइनेंशियल ले एंड टेक्नोलॉजिकल ले तो ए माने केमिति कोन क्लाइमेट चेंज को से माने क्लाइमेट हम जो क्लाइमेट एक्शन को केमिति कोन टैकल करि परिवे कि नाही काहे ना माने को पाखरे फंड बहुत कम अछि ओके टेक्नोलॉजी बहुत कम अछि बट डेवलप्ड कंट्रीज माने कोन
ମାନେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଡେଭଲପ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନିଟରୀ ପାୱାର୍ସ ଅଛି। ବଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କାପାସିଟି ନାହିଁ। ଓକେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ ନ କରିବେ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଟୁ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଓକେ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଟୁ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଓକେ ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆକ୍ସନ୍ସକୁ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି 2000 ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା କୋପ୍ ମିଟିଗେସନ୍ସ ୱାର୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଓକେ, is a closing planning of a meeting of subsidiary bodies, okay, on the mitigation work programs, okay, on Saturday India said that developed countries, okay, which has historically contributed the most greenhouse gases of the emission। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ସ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ହରିକା ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚାରକୋଲ୍ ଆମର ହେଲା କୋଇଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେମାନେ ବହୁତ ଇମିସନ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏବେ ହେଉଛି ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି ଡେଭଲପ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବା ଏଇଟା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇଟା ହେଉଛି କହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି COP 29ରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା MWP କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ନା ମିଟିଗେସନ୍ ୱାର୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଓକେ, ହେଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦ 2 years ago ଏଇଟା COP 27 ଇନ୍ ଦ କେଉଁଠି ଇଜିପ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦ ସପୋର୍ଟ ଦ ମିଟିଗେସନ୍ସ। ଓକେ, ଓକେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଯିବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ନଟ୍ ରେକର୍ଡ। ओके, गतकाली आम जो डे बिफोर यस्टरडे आम डिस्कसन करते दिल्ली स्कूल्स गो ऑनलाइन नो एंट्री फॉर द ट्रक्स एज द एयर पोल्यूशन सजन। एयर पोल्यूशन आम जो देखा दिल्ली बहुत सीवियर अच्छी एवं एंड आम जो देखा से आमर BS3 ओके 3 पेट्रोल्स BS4 डीजेल्स ओके कार्स एंड व्हीकल सब गुड़ाक सब टोटाली बैन कर। ओके, तो ये विषय में पूरा ऑलरेडी पूरा डिटेल्स रे हमें दिल्ली एयर पोल्यूशन कहीं होची कौन पाई होची एवरीथिंग हमें कथा हिचु। ओके, देखो लिखा है ओके, बट से कौन होची ना दिल्ली स्कूल्स गो ऑनलाइन ऑनलाइन एबे हबो। ओके, दिस इज द स्टेट न्यूज रे किसी भी सेमती भी इंपोर्टेंट नहीं जोटा कि हम डिस्कशन करबा। This is the editorials. Editorials रे हम जब डिस्कशन करबा दिस इज द बुलडोजर ओके राज कौन बुझी लास्ट वीक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैंडेड डाउन अ जजमेंट डीलिंग्स विथ द व्हाट हैज कम टू द नोन एज द बुलडोजर राज फॉर द लास्ट 3 years इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया म्युनिसिपल अथॉरिटी अटैक द डिमोलिशिंग द पीपल्स ऑफ एटा कौन बुलडोजर राज माने कौन माने आपण माने देखिथिबे कि हमर जो उत्तर प्रदेश कथा हो स्पेशली जदि हम कहबा यूपी एग्जांपल नबा उत्तर प्रदेश आपण देखिथिबे बुलडोजर राज माने सेठी जहां भी घर मर जहां भी अछि से गुडा सब जोटी माने किछि हमर डेवलपमेंट होबार अच्छी कि किसी इनफ्रास्ट्रक्चर गढ़ार अच्छी सरकार को से कौन कर डिमोलिश कर विषय में पूरा न्यूज अच्छी। आम देखा डिमोलिशिंग द पीपल्स होम इफ दे वर द एकोज ऑफ ऑफेंस और स्पेशली द वेक ऑफ द कम्युनल टेंशन्स और लार्ज स्केल ऑफ प्रोटेस्ट दिस द डिमोलिशिंग वर द ऑफ्टन ऑल्दो नॉट ऑलवेज द कम्युनल टारगेटेड एंड देयर वेक ऑफ ओके पॉलिटिशियंस वर सीन द पब्लिक सेलिब्रेट एंड द एंडोज देयर द फॉर्म ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड। ओके, तो आम जब पूरा डिटेल्स ओडिया डिस्कशन करबा बुलडोजर राज कथा कहबा जदि यूपी कथा एग्जांपल नेले सेठी कौन ना मुझे कहली इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसी भी कि गोटे भल किसी जिनस करा जाउछि ओके कल्चरल पई कि आमर इकोनॉमिकल पई तो सेठी कौन ना सेठी ताका घर मानक नष्ट करा जाय बा डिमोलिश करा जाउछि। ओके, तो सेठी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़छि सिग्निफिकेंट इंपैक्ट माने जो लोक माने रहउथिले सेठी से बेघर हो बेघर हो गले कौन हम रास्ता बुलवे करेंगे। ओके, तो रास्ता बुलवे तो घर रही। ओके, बट जब देखा गवर्नमेंट केते कौन कंपेनसेशन दौरान केते भी गवर्नमेंट कंपेनसेशन दौना तो से लोक मैंने कौन करेंगे तो से विषय में यहाँ पूरा डिटेल्स पूरा न्यूज़टा जोटा कि सुप्रीम कोर्ट लास्ट वीक रे से गोटे जजमेंट देते डीलिंग विथ द व्हाट हैज कम टू द नोन एज बुलडोजर राज। ओके,
a section that is still vulnerable. So, the others things to note that the court made an exceptions in the judgment of the structures certain of the public land, such as the abutting a railway track and a road and जहाँ भी वो लिखा है ओके देन हम यदि देखिबा growing epidemic India has a scale of the diagnosis to meet the 2030 WHO target for the diabetes. So हम यदि देखिबा from around 200 millions 1990 रे थिले the number of people with the diabetes has जोटा कि बढ़ी जाइछि 4 times जोटा कि 800 millions हो जाइछि 2022 रे global diabetes prevalence in the adult rose of the 7% थिला ओके बट एबे 14% हो जाइछि ओके जोटा कि 1990 रे थिला केते 7% 2024 22 रे हिछि 14% एज इन द डाटा रिलीज बाय द Lancet on the November 13 रे जी की काढिछि एटा Lancet ओके एटा हमर जदि प्रीलिम्स पई बहुत इंपोर्टेंट रहइबो Lancet कथा मन रखिबे At 212 millions Indian has been highest number of the peoples with the diabetes against the China रे केते अछनी 148 हमरा इंडिया रे केते ना 212 millions अछनी ओके India also topped the list of countries with 133 millions peoples over the age of the हमरा 30 रो ऊपर जो लोक माने ताकर 133 ओके माने millions diabetes अछनी with untreated diabetes is against the 70-80 millions केवटे China रे अछनी okay one of the reason for the steep the increase in the number of those of the diabetes was the methodology used the following and analysis the being medications of the diabetes जहाँ भी हो ओके जहाँ भी आम जो आम डायबिटीज कौन टेस्ट करछे जोटा कि आमर फास्टिंग बा आफ्टर द फास्टिंग कौन केते कौन ग्लूकोज रहउछि करछि कौन पई होउछि ये सब डायबिटीज कौन पई होउछि देखो जदि डायबिटीज कथा हम डिस्कशन करबा देखो आमर जदि देखिबा खाइबा ओके रहिबा सुइबा एगुडा सब माने इरेगुलर होउछि माने जे देखिबा आमे हाई कैलोरी आमे इनटेक करछे जोटा कि आमर रहउछि कार्बोहाइड्रेट बहुत रहउछि ओके आमे एक्टिविटीज किछ करूने एडी लिखा है while consumption of unhealthy food particularly high calories food carbohydrates saturated fat okay sedentary lifestyles एगुडा को होची जोटा कि हमर डायबिटीज को अधिक बढ़ौची देन टोबाको यूज जे माने करछन से माने को अधिक रिस्क रहउची जोटा कि हमर डायबिटीज होबार कंपेयर टू द नॉन टोबाकोस ओके एटी पूरा डिटेल्स लिखा है ओके तो डायबिटीज हेले कौन सब असुविधा हो ना मॉनिटरी लॉस हो कंटिन्यू भी मॉनिटरी लॉस हो ओके माने हमर वर्क एक्टिविटीज कमी जीवो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कमी जीवो ओके ये सब अफेक्ट द इंसुलिन प्रोडक्शन एंड द रेगुलेशन द ग्लूकोज प्रोडक्शन which together play an important role on the onset of the diabetes nicotine also induced in the insulin resistance okay ame kon insulin no diabetes ela mane insulin hoche se bisare te lekha hoiche okay with the 133 millions people remaining the undiagnosed India has rapidly scale of the diagnosed by the 2030 WHO target for the diabetes 80% of people with the diabetes and the diagnosed and the 80% of people in the diagnosed diabetes have a good control of the glycemia okay then this is the news eta hochi amara Israel katha and Palestine katha no accountability ete भी हमको दरकार नहीं पुराना न्यूज एटा न्यू जस्टिस या एंड रिमेनिंग द जस्टिस इटा कौन आमर रिसेंटली जदि देखिबा आमर आपण माने देखिथिबे आमर जति को आमर जो कोर्ट रूम हे गला ओके जस्टिस कथा जदि हम कथा बा सेठी आमर अंधा कानून आपण सुनिथिबे अंधा कानून माने होचे आय गोटे लेडी थिबे तांखर आय रे होचे कोन हेता ना पट्टी बना हे थाए ओके बट रिसेंटली हम जो देखिबा द एडिशन ऑफ द ओपन आयड जस्टिसिया तांको कोन कोन जस्टिसिया कोनती ओके in the Supreme Court of India has lead the public debate it would debate egala okay a new 6 foot okay white statue is a sari clad ornamented goddess like figure without a blindfold holding scale in her right hand and a copy of Constitution of India in her left hand माने left hand रे कोन ना Constitution of India दचंदी and right hand रे गुटे scale दचंदी okay scales
it signified said that the CJI okay DY Chandrachud जो जे थिले हमरे एबे चेंज हो जाचंती okay then हम के हो कमीशन द स्टेच्यू इन द अक्टोबर 2024 रे से कमीशन करथिले द लॉ इज नॉट ब्लाइंड से कोन ताकर से कोन कहछन द लॉ इज नॉट ब्लाइंड इट सीज द एवरीवन इक्वल दिस इज द हिस्टोरिकल स्पीकिंग्स फॉजलिंग इन द since the Bombay High Court has been often the Justiciar statue along with the Statue of Mercy. The often justice is the part of the colonial iconographic, okay, and the blindfold figure of the justice, okay. तो एबे जो हमर अंधा कानून कथा कहउतली कि अंधा कानून सेटा होछि कोन जेटा पूर्वरु थिला ओके एबे होछि जस्टिस हमर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थिले ओके डीवाई चंद्रचूड़ से एटा को ये करचंती कोटा फिगरटा को कमीशन करचंती ओके से विषय लिखा है जी कोन पई एटा होछि हमर हिस्ट्री कोन मान केबेठो कोन हेथिला हमर जे जस्टिसिया काहा को कहछि जो स्टैच्यूटा को सेटा होछि जस्टिसिया ओके से जस्टिसिया से हमर से कथा लिखा है जी देखो ब्लाइंड फॉल एग्जिस्टेंस इन एंशिएंट रोमन कथा लिखा है जी ओके हमर तापर कोन लिखा है देखिबा ओके देन हमर मोरल इन द कोर्ट मोरल इन द कोर्ट माने मोरल कौन सब अच्छी जस्टिसिया से सब एठी लिखा है अपन जस्टिसिया एंड यूज ऑफ द अब्लेस्ट द मेटाफोर्स ओके ये सब पूरा डिटेल्स लिखा है ओके महात्मा गांधी कथा एठी लिखा है महात्मा गांधी डिपिक्टेड महात्मा गांधी धम्म चक्र एंड गॉडेस ओके से विषय do not cause the newer form of the discrimination okay controversy around the statue are not new even also पूर्वरु भी हेछि जेमते history of the mother and child statue in the court suggested but as this writer has demonstrated in the 2017 work mentions about the but एटा होछि पूर्वरु भी controversy थिला okay this is the justice या कहा को जाय सेटा मन रखिथिबे and एबे जो हमर जो इनॉग्रेशन हेछि बा कमीशन हेछि ता ऊपर भी टिके माने माइंड टिके नॉलेज ता रखिथिबे सो जे क्वेश्चन जदी केतेबेला आसीबो कोठी भी तो आपण यू कैन स्किप इट एंड आपण माने लिखि पाइबे सेठी then this is the election news not required for the OPSC and UPSC pai this is the international news okay this is the very important जोटा कि GS4 हमें कवर करिबा GS4 ethics रे हमें कवर करिबा why were the Kerala IAS officers suspended okay recently हमें देखिबा दु जन केरला IAS officers जोटा कि तांकू सस्पेंडेड कराई छि सेठी पूरा डिटेल से लिखा छि केरला हैज सस्पेंडेड 2 IAS officers okay काहे कि करछथि काहे ना सोशल मीडिया रे से माने रूल ऑफ वायलेशन करछथि हमें जे देखिबा चार्जेस अगेंस्ट द एन प्रशांत इज द okay derogatory statement on the social media against the Jallikot IAS additional chief secretary कौन हेछि ओके तो जे देखिबा से माने कोन कहछन ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 covers the conduct of IAS IPS and जोटा कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स से कोन कहछन सेटा को कोन कहछन ना तोडिचंती okay सेते कोन लिखा है the officers should maintain high standard of ethics integrity honesty political neutrality accountability transparency but they should uphold the supremacy of the constitution value they can be participate or contributed in public media in the bona fide discharge of their duties they shall not in the communicated over the any public media adversely criticize the policies government okay they shall not have recourse of any court or press for vindications of official act okay ये सब एटा सिविल सर्वेंट करिया कथा बट व्हाट आर द इश्यू यदि हम देखिबा से माने कोन करछन से माने व्हाट्सएप ग्रुप गुटे करथिले जोटा कि ना थिला कोन से लिखा छि देखंतु मल्लू ग्रुप समथिंग ओके प्राइवेट एंड ऑफिशियल लाइफ ऑफ ऑफिसर दैट आर अपकमिंग द ओके समवेयर इट लिखा हिथिबो देखिबा किछि गोटे मल्लू ग्रुप करिके से माने बनै थिले हिंदू मल्लू ग्रुप करिके तो सेते यस ये देखा मल्लू हिंदू ऑफिसर्स ओके मल्लू हिंदी ऑफिसर्स दिस वन ओके व्हाट्सएप ग्रुप बनै थिले ओके तो सेति पई तांको होची सस्पेंड कराय छै ओके
तो अपन माने जो माने भी सिविल सर्वेंट हेबे तो यू हैव टू मेंटेन द ऑल द थिंग्स इथिक्स इंटीग्रिटी ओके से गुडा सब अपन को कोन करिया पड़ियो मेंटेन करिया पड़ियो ओके एमति नै जे पब्लिकली अपन किसी भी को कहि परिबे से सब करि परिबे नै देन दिस इज द न्यूज़ ओके एथि भी समति भी किछि भी इंपोर्टेंट नै जोटा कि हम डिस्कशन करिबा ऑलरेडी हम डिस्कशन करछु ओके देन दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट न्यूज़ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव मेंटेन टाइज डिस्पाइट ऑफ चेंजेस ओके अपन मन जानछंती हमर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश से एक्साइल करथले किछि हमर अगस्त रे बट हम जे देखिबा ताकर जो इंटरिम गवर्नमेंट रो एबे यूनुस अछंती से भी माने मेंटेन करछन जोटा ट्रेड एंड एवरीथिंग ओके इंडिया एंड बांग्लादेश हैव मेंटेन देयर टाइज डिस्पाइट टर्बुलेंट चेंजेस एंड चेंजेस इन द पॉलिटिकल विंड्स ओके से विषय लिखा है इंडिया बांग्लादेश ऊपर पूरा डिटेल्स हम पूर्व कवर करछु कोन कोन इशू अछि एवरीथिंग जो मन देखि न पूर्व देखि परिबे ओके okay this is the very important news जदि कहबा women entering the labor force earning the less they did the earlier हम जे देखिबा LFPR एटा कोन ता लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ द वुमेन जोटा कि बढ़ी छी ओके 27% इन द 2017-18 थिला 41% 2023-24 रे हला ओके ओके तो जदि देखिबा एते बढ़ी छी बट समानकर जदि पार्टिसिपेशन बढ़ी छी बट जदि देखिबा ताकर इनकम बहुत कमी छी ओके एटी पूरा डिटेल्स रा ये हमर कहिचंती जयराम रमेश कहिचंती दिस इज द इलेक्शन political news not required for the OPSC and UPSC ओके तो एटा अपन टिके मने रखिथिबा सेंटर aims to make the Andaman and Nicobar island to the tuna export hub एटा टिके जदि प्रीलिम्स आसीबो केबे तो यू कैन स्किप माने हमरा करि परिबे आपण ओके द एन एज एक्सपोर्ट ऑफ टूना फिश फ्रॉम द इंडिया इंक्रीज बाय द 31.83% इन द 2023-24 द सेंटर इज exploring the new area to source one of the most commercially vulnerable fish okay this is the world news जदि कथा हबा इटा इंपोर्टेंट देखंतु यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया vows to build the military ties to counter the China this is the China this is the USA okay USA this is the Japan this is the हमारा होची ऑस्ट्रेलिया तो ये तीन जन मिसी के कोन आको काउंटर करछंती जोटा कि चाइनीज को काउंटर करिवे ओके तो ताको समान का डिफेंस फोर्स मिलिटरी टाइज करी के समान आगो टैकल करिवे then हम जब देखिबा this is the news Israel strikes in northern Gaza killing 30 including this जो देखिबा पुराना न्यूज बहुत पुराना न्यूज Israel Palestine war जो चली छी बहुत पूर्व चललानी ओके एटा ओल्ड न्यूज then USA support कर चिकागो ना ताइवान को ओके इज जे रेल लाइंस इन द टाइज जी जिनपिंग कहचनी बाइडेन को कहचनी ओके जदी देखिबा ये चाइनीज हमर प्रेसिडेंट USA प्रेसिडेंट ओके तो आम जो देखा ताइवान को किए हेल्प कर नाम यूएस तार सपोर्ट दौर मिलिटारी एवरीथिंग सपोर्ट दौर बट चाइना से चाहूनी ओके से विषय एटा किछि अछि दिस इज द स्पोर्ट्स न्यूज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ऑफिस एंड यूपीएससी देन आम जदी जिबा लास्ट को जिबा साइंस रे किछि अछि गोटे new infectious disease among the bees threaten world economics okay तो हमें जदि देखिबा ये जो होचंदी बीज ओके माने कोन ना पॉलिनेटर एक सिग्निफिकेंट चॉक ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एमाने जदि एमान को जदि इन्फेक्शन हे जिवो से ताले कोन हे जिवो हमर एग्रीकल्चर एक्टिविटी रे बहुत कोन हेम्पर हबो केमते हबो कोन हबो देखंतु एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी रिलायज ऑन द स्मॉल इंसेक्ट पॉलिनेटर्स जोटा के एमान को कोन कहछ पॉलिनेटर कहछ मोर देन 70% ऑफ द फूड क्रॉप्स फ्रूट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स नीड बीज वास्प एंड द बीटल्स एंड द फ्लाइज एंड द मोथ एंड द बटरफ्लाइज माने बहुत दरकार कहीं माने होचंती ग्रेट पॉलिनेटर्स ओके दिस इज व्हाई द थ्रेट्स टू इंसेक्ट पॉलिनेटर्स इंक्लूडिंग द पेस्टिसाइड यूज करछे पॉल्यूशंस क्लाइमेट चेंज एवडा सब एमान को कोन करछि ना एमान को डाइज हे जाउचंती ओके तो सेति पई एमान को बहुत नष्ट हे जाउचंती बा इन्फेक्शियस डिजीज होउची सो दैट कोन ना फूड सिक्योरिटी पर हेम्पर पडिबो ओके सेति पई एटा न्यूज़ ता अछि व्हाइल द डिक्लाइन इन द पॉलिनेशंस ऑफ द पॉलिनेटर्स पर्टिकुलरली bees has been
in the well documented in the Europe and North America. Data of the biodiversity rich regions in the Indian subcontinent are scarce. Okay. एमाने जदि नष्ट होइजिबे ताने हम जो पॉलिनेशन जो प्रोसेसटा सेटा कोन होइजो ना डिस्टर्ब होइजिबो. ओके. डाइवर्सिटी इन द बेटर एगेन्स कथा कहै छी. हैबिटेट ओवरलैप एंड नेटिव्स बीज कथा एट लिखा है. Then when the bees migrated am 2009 रे since 2009 एमाने कोन करछन माइग्रेटेड करछन्ती. ओके. गोटे जगह रु आ गोटे जगह को जदि देखिबा से माने माइग्रेटेड करछन्ती. We have been surveying the different states such as हमर हेला गुजरात, मध्य प्रदेश, हमर महाराष्ट्र. In some of the areas local bee pollinations are absent probably because they are on the migratory route of the manage the western honey bees. Okay. Need for focus कौन करिबा. The experts agree that more research and surveillance are required for the monitoring the emerging the diseases in the bees and other pollinators. एवढा सब करिया कथा. ओके. तो आज एति गई थला डिस्कशन. थैंक यू. जदि आपण मानको भल लागुची यू कैन सब्सक्राइब इट एंड आपण को फ्रेंड्स जो माने प्रिपेयर होउछन से मानको आपण शेयर भी करि परिबे. ओके. थैंक यू. जय जगन्नाथ.